अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वेल्थ विद अली के साथ अली। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको पावर बीआई की बड़े अहम टिप दूंगा। देखें, आपको रिपोर्ट बनानी आती है बट यू डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट दिस रिपोर्ट। स्पेसिफिकली अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं, सो फाइनेंस बैकग्राउंड वालों को यह पता होता है कि कौन से केपीआईज कैलकुलेट करने हैं, किस तरह से कैलकुलेट करने हैं और कौन से केपीआईज दिखाने हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट। सो इस वीडियो में मैं इस हाउ फैक्टर का जवाब दूंगा और आपको यह बताऊंगा किस तरह से आप इस सादा रिपोर्ट को इस तरह की रिपोर्ट में बगैर कुछ मिनटों में किए इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बगैर टाइम वेस्ट किए जंप करते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो में I will only talk about specifically regarding the Power BI designing. Okay, let me show you the report first. Now this is the simple report. Now this video is more important about finance guy, because क्या होता है कि usually जो finance background से होते हैं, they know how to calculate the KPIs. For example, how to calculate the current ratios, debt to equity ratios, and various type of KPIs. And they also know what type or what kind of KPI I want to show. But जो स्किल उनमें नहीं होती या जो कम होती है as compared to other fields, they don't know much about the designing of the report. Like for example, they know calculation कैसे करनी है, they know present क्या करना है, but they don't know how to present. So in this today video, I will answer that how part, कि किस तरह से हम इस रिपोर्ट को जो आपके सामने है इसको हम नियॉन कलर यूज करके या किस तरह से हम जो है वो बेहतर कर सकते हैं। ओके, जस्ट फॉर FYI, आई वांट you know show any of function, any other function like DAX function or any other KPI. This video is dedicated to the designing part, which is my favorite. I also came from the finance background, but मैंने इस पे जब वर्किंग की अपने कैरियर में, so I've seen the boost in my career. बिकॉज समटाइम आपको पता होता है कि प्रेजेंट क्या करना है, समटाइम आपको पता होता है काम क्या करना है, बट आपको लोगों को शो करवाना नहीं आता। और जहां तक बात रही डिजाइनिंग के पार्ट में, तो पावर बीआई डिजाइनिंग पार्ट इज मच मोर इम्पोर्टेंट एंड योर अर्निंग विल डेफिनेटली इंप्रूव अगर आप ये डिजाइनिंग के पार्ट को थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं। और ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप दिल से करेंगे, इंटरेस्ट लेके करेंगे, तो डेफिनेटली आपको बेहतर करेंगे। ओके, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो अब हम शुरू करते हैं अपने पहले स्टेप से। मैं हमेशा एक एडवाइस देता होता हूँ कि अगर आपने डिजाइनिंग शुरू करनी है तो कहीं से आप एक रेफरेंस जरूर लें कि मैंने पहुंचना कहाँ तक है। और वो रेफरेंस आपको अपनी जो मोबाइल की स्क्रीन है उससे बहुत अच्छा मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट द आइकॉन, इफ लुक एट योर फेसबुक आइकॉन, इंस्टाग्राम आइकॉन, सो वो किस तरह से स्क्रीन से सेपरेट नजर आ रहे होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, I will show you how you can, extract these. तो आपने किसी एक आइकॉन को सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, आई सेलेक्ट दिस आइकॉन, टोटल एसिड। हम जाएंगे इफेक्ट पे, जर्नल पे, देन इफेक्ट, देन आई यूज द विजुअल बॉर्डर एंड देन शेडो। नाउ सी दिस, नाउ दिस इज नाउ लुक गुड। व्हाई? क्योंकि अब ये अपने सरफेस से सेपरेट नजर आ रहे हैं। ओके, नाउ अगेन मुझे इसको अगर मैं सेलेक्ट करूं, I also do so many things. For example, अगर visual borders पे जाएं, you can also change the color of visual border. But for this, I think the black is pretty much. You can also round the corners if you want. See like this. See like this. This also looks beautiful, but generally I prefer 20. See, now you just remember the first part of that video and the second part, कि अब ये किस तरह से बेहतर लग रहा है कि अब नाउ दिस लुक समथिंग ओके, दिस इज इंप्रूविंग आवर रिपोर्ट। ओके, अब अगर अब मैं ये स्टेप सब पे करूंगा तो प्रीटी मच काफी ज्यादा टाइम लगेगा। सो मैं जस्ट क्या करूंगा, किसी एक पे क्लिक करूंगा, गो टू होम टैब एंड
format painter. Just see this automatically, you know, the improvement is going on. So just simple again आप करते जाएं and this ओके अब मैं यहाँ से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा बिकॉज टाइम सेविंग ओके इसके बाद नाउ वी जंप ऑन टू नो देयर आर लॉट ऑफ गैप्स बिटवीन देम अब इनको एडजस्ट करते हैं सो व्हाट यूजुअली आई डू इनको एक लाइन में लेके आते हैं एंड देन इनका यहाँ से कुछ हम करते हैं इधर हम जाएंगे इंसर्ट पे और whatever the shape you like you can use this. I usually prefer this one, so let me resize this. Okay, now after resize this, go to format and send to back. See this. Now after this I remove this card background. See this and shadow, so it looks like this is something like we use like this. And for the font we again go to visual, call out value, and for the font we use white, and for this we also use white, and for journal, for title we also use white, and for visual, for the shape, sorry, we don't use the background is okay, but yeah, we use this. See, okay, so now same we I repeat same step for these two. Let me fast forward this video. Okay, after applying this shape to all of these three, so our next step is to adjust this, font text, the font size or the font style of all of this, and little bit the visuals. So there's a shortcut of this. You don't need to worry. You just, jump onto this website. You just jump onto this website. This is the website name, the Power BI theme generator, the Power BI theme generator. So now what this website will provide you, it will provide you the theme, the font size, and all of these kind of little bit adjustment. Okay, so just go to trending. Now this website will provide you the most trending style of the market will accept. For example, you can use this. Okay, and also use this. What do you like? Whatever you like. For example, I select the first one. And then I simply create the JSON theme and type my email and agree. And after it, just creating and download that theme. Now, again, go to your Power BI report and come on to view, press it down arrow and browse for theme and find where you save this theme. This is your Power BI theme and press OK. Now the magic will happen. See, now this theme is applied with no time. Let me, change the color of this. So okay, so after the theme that we download is applied,
So let me, remove these second values. Just go to there, set title, and we don't need now subtitle. Just remove the subtitle of all of them. See, see now and there as well. It's pretty much it's अच्छा लगता है आप पावर बीआई के साथ जब प्ले अराउंड करते हो. Just it little bit left, so it more on the line, and this thing is touching to the wall of that. Okay. So now with respect to the font size, it looks better. But the our concern is about what about the background colors? In today's time, the neon theme colors is pretty much are using. But how we extract them? Because if you go to the Power BI background and if you canvas background, there is no neon color. Even if you type the neon color code, this won't happen. This code doesn't work. So our last approach is to where to find the neon themes. Now there's a shortcut of this as much as well. You just open the Canva and use the just open the Canva, go to any of your blank canvas, and then go to element. Now type neon background. अब ये आपको बहुत से neon background देगा. Whichever you like the most, आप वो select कर सकते हैं. Okay, let me pick, I guess so. In this video, I will use maybe one or two, just make sure it. Okay. Now this is our background. Now what you do now, just save this theme as an SVG and download. Now save here, and again go to your Power BI report and go to canvas background. See, go to canvas background. Now browse that theme which you saved. YouTube. Okay. Now this is our theme. Now this theme is applied. Now what we gonna do? We just remove their transparency, reduce their transparency like this, like this, like this, like this, and like this. And also you also just this, go to visual, slicer heading, the background is pretty much on, the values is on, this background, and maybe we choose the black, which is maybe matched with this type of surface as well. Now for the font, I have to choose the font, the white. Just like this, go to callout value, this white, and category label, I don't need category label, and go to effect title and go to white. Now let me, fast forward this video. Now after, change the font colors of all of these, see, this is our final output. And if you compare this output, what we have the original, now this is our original output.
Now see the difference. Now, with respect to the neon colors, if you go to Canva, you can use whatever color you want. Why I suggest Canva? Because in the Power BI, there is not so much option regarding the neon color than regarding the new background. So for example, if you pick something like, for example, more bright and more the light colors. For example, let me pick one. No, I think this one is also better. Okay, we also use, okay, let me apply this. Use this, and just I show you the example. Maybe this won't look good on the report, but just use it. Just make a habit to play around with the Power BI. So you definitely learn something. Okay, let's save this and jump on to the Power BI report, and again go to canvas, background, image, browsing image, and this is our new. Let's apply this. तो जी उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक मेरा पावर बीआई का बेसिक कोर्स नहीं देखा तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो कोर्स देखें और अपनी स्किल को एनहांस करें ताकि आप भी पावर बीआई को यूज करके उससे कमा सके। ओके जी, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज।